Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all will be fine and your study will be going well. So today our topic is about parts of speech. Today we will discuss parts of speech. What is part of speech? Why do we study parts of speech? What are the main benefits of parts of speech? I choose parts of speech for English for a first lecture because most of the people appear in their ETA tests, in army tests, MDK tests, NET tests. So, in short, English grammar is very necessary or compulsory for each every individual student. Most of the students fail their CSS exam because of English grammar, essay, pre-C. However, I suggest you to concentrate on your English grammar. So, without wasting your time, let's come to the topic. The word part means segment. हमारे साथ word part का मतलब है segment, ठीक है? And the word speech means dialogue or conversation. डायलॉग और कन्वर्सेशन हमारे साथ जब भी दो लोग आपस में बातें करते हैं तो उसको कन्वर्सेशन कहते हैं. डेट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन. सो नाउ व्हाट इज द डिफिनीशन? वर्ड्स which we use both in written and spoken conversation is called parts of speech. यानी वो अल्फाज जो हम अपने रिटन में इस्तेमाल करते हैं और कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाजों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं. और दूसरा डिफिनीशन ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स वर्ड्स विच आर डिवाइडेड into eight different classification according to their grammatical rules and functions. यानी वो अल्फाज जिनको हमने 8 हिस्सों में डिवाइड किया है उनके फंक्शन के मुताबिक. We have 8 parts of speech. So there are 8 parts of speech. In each part has its own function in a sentence or in a speech. So it's mean that there are 8 parts of speech and each part has its own function in a sentence or in a speech. Noun has its own function, pronoun has its own function, verb has its own function which show action. Noun is used to identify someone or something. Pronoun is used instead of a noun. Adjective is used to modify noun and pronoun. Conjunction has its own function, adverb has its own function, preposition has its own function, interjection has its own function in a sentence. So they all have different function in a sentence or in a speech. Okay, all parts of speech divided into 2 different classification. हमने इन सारे 8 parts of speech को 2 हिस्सों में तकसीम किया है आपने इजी के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए. So the first part is open parts of speech and the second one is closed parts of speech. Open parts of speech and closed parts of speech. So first we will study open part of speech. There are 4 open parts of speech. For example, noun, verb, adverb and adjective. They have different forms.
यानी इनका मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। नाउन के अपने फॉर्म्स होते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। एडवर्ब के अपने फॉर्म्स होते हैं and they are used differently with singular or plural subject and with present or past tenses। यानी ये tenses और subjects के मुताबिक बदलते होते हैं। It is used differently with singular subject and with plural subject and with present and past tenses। So now we will study closed parts of speech। There are four closed parts of speech। We have closed four parts of speech। The first one is pronoun, then preposition, conjunction, and interjection। They are those parts of speech which do not have different forms। यानी उनके मुख्तलिफ फॉर्म्स नहीं होते। प्रोनाउन के हमारे साथ मुख्तलिफ फॉर्म नहीं है, प्रीपोजिशन का कुछ फॉर्म नहीं है, कंजंक्शन का फॉर्म नहीं है हमारे साथ। दे डू नॉट यूज डिफरेंटली विद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट एंड विद प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस। हमारे साथ ये सब्जेक्ट बदलने से, सिंगुलर प्लूरल होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या टेंसेस फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पर कोई असर नहीं होता। सो हम नाउन पढ़ेंगे और नाउन फुल डिटेल में पढ़ेंगे। टुडे इन टुडे लेसन वी विल स्टडी जस्ट द होल स्ट्रक्चर ऑफ नाउन and this whole structure will be studied in the future if God willing। So today we will study about noun and the whole structure of noun, kinds of noun, cases of noun, genders of noun, forms of noun। So there are 10 kinds of noun: common noun, proper noun, and third one is collective noun, then material noun, abstract noun, concrete noun, compound noun, count noun, non-count noun, and verbal noun। So cases of noun: subjective case, objective case, possessive case, vocative case, appositive case, complementary case, and the last one is oblique case। We will study it in the future if God willing। Genders of noun: there are 4 genders of noun: masculine gender, feminine gender, common gender, and fourth one is neuter gender। Forms of noun: singular form, plural form। There are 2 kinds of plural form: regular plural form and irregular plural form। So today we have just studied parts of speech and structure of noun, the whole structure of noun। If God willing we will study this whole structure, the kinds of noun, cases noun of noun, genders of noun in very detail, forms of noun। So the next our topic is about common noun। We will study common noun। एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यूर सेल्फ दैट ये बात मुझे बहुत इरिटेट करता है कि जब मुझे दूसरे लोग कहते हैं कि इंग्लिश कंसेप्चुअल है। ठीक है, इंग्लिश कंसेप्चुअल है, मगर इंग्लिश में मेमोराइजेशन बहुत होती है, स्ट्रक्चर याद करना बहुत पड़ती है और डिफिनीशंस याद करना पड़ती है। तो इंग्लिश में याद करना बहुत ज़रूरी होता है। सब कुछ कोई मैथ्स तो नहीं है कि अंडरस्टैंड करके याद करो, तो इसमें मेमोराइजेशन ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ मेमोराइज दीज थिंग्स। सो गुड बाय, विश यू बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।